क्या बात है, very nice, very nice. Okay, so good morning, my dear lovely students. And right now I can see only 15 students, which is not good. Okay, teachers are calling every day those who are not attending the class. Uh, this is something not good. Well, but I must appreciate the regular students. Seriously, you deserve a big appreciation, and of course, you will get full marks in portfolio and subject enrichment. Okay, so well done. I really clap for you, and I know many of you are attending the class seriously. Okay. Okay, I have got a nice message. Harshit from Harshit. Words को चिपकाने वाला फेविकॉल कंजंक्शन मार खाएगा एक आध दिन. Yes, Adi Jain, you raised your hand. Anything want to say? Sir, may I go to drink water? Okay, go and come fast. Well, I know, I think that you are with your copy and pen. If you uh, haven't arranged, so arrange it right now, because today there will be writing task for you. Okay, and see, every day you have to sit with a copy and a pen. Okay, and then pen must be full of ink. ऐसा नहीं कि खाली पेन लेकर बैठ गए. Okay, so let us move to the point, which is very, very, very important point. Okay, conjunction, and today we will try to finish it up. Though it doesn't seem possible, but we will try, and we must try. Sir, you are muted. Yes, yes, my dear students. So conjunction, fanboys. Yesterday we saw it, and actually I have forgotten how many types of conjunctions are there. Can anybody tell me without watching the copy or book? Sir, 8 types. How many? 8. I am asking types of conjunction, not example. Sir, there are sir. Yes, three types of conjunctions are there, and now who can name them? Sir, I am sir. Yes, Piyush, batao. Coordinating conjunction, Then? collective conjunction, Sir, correlative, subordinate, coordinative. coordinating conjunction. Yes, yes, yes. Yes, so my dear students, जिन लोगों को याद नहीं है फिर से याद कर लेते हैं. There are three types of conjunctions: coordinating, subordinating, correlative. Okay. Now, if I ask which conjunction is used to create complex sentence? Sir, I want to take screenshot of what is conjunctions Okay. before slide. Yes, yes, yes. It is here. You just take screenshot and you must complete the notes. Okay. So Yes. what I was asking, very simple.
So, which conjunction is used to create complex sentence? Either it is coordinating or subordinating or correlative. What do you think? Sir, Yeah. subordinating. Is it your guess or you have applied any logic? Sir, I have applied logic. It can be correlative also. I think it's subordinating because coordinating is always compound sentence, and Yeah, subordinating can be is always complex. exactly, Um, exactly. mm, Good. Correlative, actually, Sir, it is because bit. Yes, yes. Continue. sir, because we use that. सर कैन आई से इन हिंदी क्योंकि सर बिकॉज बोलेंगे तो बिकॉज हो जाएगा सर आई एम श्योर यू आर कंफ्यूज्ड No, no, no. I am not confused. I have understood your logic, what you are applying. सर जिसमें रीजन देते हैं ना तो उसमें रीजन वाले सेंटेंस में हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही यूज होते हैं Yes, correct, correct. So it is nice logic. Yashita has applied. Good. And I want this type of answer from everyone. Yes, Deshna. Deshna, are you there? Deshna. No response. Okay. Well, so we have come to know that coordinating conjunctions are used to create compound sentence. Now we are moving towards subordinating conjunction and examples you can see because saying so that if. Okay, so let us move and let us know about subordinating conjunctions. Well, so here it is. So you can understand with the definition why it is used. These conjunctions are actually ये आना चाहिए conjunctions. Okay, just a minute. These conjunctions are okay. Now it is correct. Okay, got it. Fine. Just a minute, screen share is stopped. Okay. So subordinating conjunctions, these conjunctions join an independent clause with a dependent clause. Clear? Very simple. And I asked question ki which one is used to create complex sentence, which conjunction is used to create complex sentence. So the answer is subordinating. Here we can see the example. Here you can see when, who, because, and since. Okay. So the first example says, when I reached there, so your sentence is not completed. अब बोलते जब मैं वहां पहुंचा तो आगे कुछ हुआ होगा, है ना? द लिसनर विल आस्क, हाँ फिर आगे क्या हुआ भाई, ऐसा वो कहेंगे। तो आप बताओगे आई सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग, तो अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. The first one is dependent clause and second one is independent clause. Very simple to understand. ठीक है. अब if I ask you to create one more sentence with when, so tell me fast. When से ही एक और sentence बनाओ इस टाइप का. ठीक है. सर व्हेन आई सॉ द थीफ आई देन आई कॉल्ड द पुलिस Okay, good. And you should do that. Very nice, Yashita. Yes, anyone else in the class? I know everyone can do this. Yeah, I'm waiting. Harsh, Nitya, where are you?
Sir, may I tell? हाँ, sure, sure, of course. When I was in Red Fort, someone attacked the Red Fort. Okay, so this is a recent, this is a current affair. Okay, nice example with real uh, current affair, whatever you say. Yeah, next, anyone? See, with this, we actually improve our spoken part. If you create sentences, your spoken part is improved. So try to give more example. Sir, can I say? I think it is Piyush. Yes, sir. Yes, Piyush. Tell me. When I talking, when I is when I Yes. When I. talking with someone, Hmm. one push me. ओके, उसके बाद हिंदी में बताओगे बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? जब मैं बात कर रहा था, हाँ, तब बस किसी ने मेरे को धक्का. so actually when it is continuous tense at that time we basically used while. ठीक है, when का यूज उसमें नहीं होता, तो while I was talking someone pushed me. Okay, that's good. Next example. Did you know the man who entered in the class? So here two clauses you can see. Did you know the man, ये dependent है, लेकिन इतना सा who entered in the class ये independent clause. Then I don't want to waste any single moment because my homework is left. So because my homework is left, ये हो गया हमारे लिए डिपेंडेंट क्लॉज, और ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर आप इतना बोल के रुक भी जाते हो, फिर भी कोई सवाल नहीं करेगा कि जैसे आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी सिंगल मोमेंट, इतना बोल के आप चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन अगर आप ये बोलते हो बिकॉज माई होमवर्क इज लेफ्ट, क्योंकि मेरा होमवर्क बचा है, तो क्या, ऐसा सवाल आएगा ना भाई, तो क्या. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. नेक्स्ट, since it is a repeated mistake, our teacher is going to scold them. ठीक है, since मतलब क्योंकि. ठीक है, since और as जो है उसका यूज भी मैं बताऊंगा जरूर. कई जगह पे मतलब as और since का सेंस जो है वो सेम लगता है हमें, इट सीम्स सिमिलर, बट हल्का सा एक जगह चेंज है, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. तो since का मतलब होता है क्योंकि. सिंस इट इज अ रिपीटेड मिस्टेक, क्योंकि ये एक बार बार दोहराया गया एक मिस्टेक है, तो हमारे टीचर हमारे टीचर उन लोगों को डांटेंगे, इज गोइंग टू स्कूल देम. ठीक है, तो these are called subordinating conjunction. Now it is time to Sir, I see. have a doubt. Yes, what's your doubt? Sir, in coordinating conjunction. Coordinating conjunction, okay. सर जैसे सबऑर्डिनेटिंग में एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सर कोऑर्डिनेटिंग में भी ऐसा कुछ होता है क्या? कोऑर्डिनेटिंग में जनरली तो देखो उसमें फिर एक्सेप्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन. बेसिकली जो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस है उन्हें तो हम लोग यूज करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, है ना. वी यूज दोस लाइक नॉट, then so, okay, then but जैसे सबऑर्डिनेटिंग में डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग में भी ऐसा कुछ होता है या कैसा भी होता है? see, here actually there is a big role of sense of sentence and structure of sentence. Clear? Just now you look at the example. I would like to stay here, but I
want to go the haunted house. So if you see this clause, but I don't, but I won't go to the haunted house, so it seems dependent, है ना? क्योंकि अगर हम लोग इतना बोल देते हैं लेकिन मैं हॉन्टेड हाउस में नहीं जाना चाहूँगा, इतना बोलते हैं तो फिर वो क्या लगता है हमें कि हाँ वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट इज नॉट कंप्लीट क्लॉज, ठीक है? सो बट अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे जाओ, जैसे कि यहाँ पर एक कॉमा यूज किया गया है, उसके बाद ये आई वुड लाइक टू स्टे हियर, ये इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। और जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि मैं Clause. हाँ मैं भूखा हूँ, ठीक है, इफ आई से कि आई एम हंग्री बट आई हाँ सो दैट आई वांट टू ईट, सो आई वांट टू ईट, व्हाई? बिकॉज आई एम हंग्री, है ना? तो वो सेंटेंस का सेंस भी मेरे पहले वाले सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो आप सेंटेंस देखो, इसमें आई वुड लाइक टू स्टे हियर बट आई वोंट गो द हंट, है ना? तो ये एक दूसरे के साथ रीजनिंग में कोई जुड़ाव नहीं इनके साथ, है ना? मतलब आप अगर वो हॉन्टेड हाउस में नहीं जाना चाहते, इसके बदले आप रुक सकते हो, आप खेल सकते हो, आप सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। Sir, लेकिन it means that half independent sentence clause plus independent sentence. हाँ, you can assume it like this way. So let us move to the last conjunction, that is correlative. Correlative conjunctions, पहले तो ये समझ लो कि ये दो पार्ट में ज्यादा रहता है, मतलब ये कोई सिंगल वर्ड नहीं, you will find two different words in single sentence, ठीक है? So you have to use maximum glue in correlative conjunction because आपको दो बार glue का यूज करना पड़ेगा, है ना हर्षित? Subordinating conjunction. हर्षित कहाँ गया? हर्षित आजकल बात नहीं कर रहा है। हर्षित ने कहा कि भाई कंजंक्शन फेविकॉल है जो वर्ड को जोड़ता है, तो यहाँ पर दो बार फेविकॉल का यूज करना बेटा। Okay, jokes apart. So correlative conjunctions. So let us see what is it. These conjunctions are used to join two balanced clause words or phrase. So ये एक थोड़ा सा नया चीज हमें दिख रहा है। We can see one new thing, that is balanced clause. Now what is called balanced clause? Just watch the example and you will understand it easily. Okay. Now tell me, you can see that there are two clauses. Okay, I will cheat in exam, I will support you. So my dear students, now tell me, do you find the tense is same? What do you say? The tense is same for both the clause? Yes, sir. Exactly, tense is same, and the structure of sentence, that is also same, I hope. Subject plus verb, then subject plus helping verb, then verb. Here it is also subject plus helping verb and then verb. So this is called balanced clause. मतलब दो क्लॉज अलग अलग तो है, लेकिन उनका टेंस, उनका स्ट्रक्चर वो क्या होता है? सेम होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है बैलेंस्ड क्लॉज, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ये सेंटेंस का जुड़ गया है, जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज एक्चुअली कंबाइंड सेंटेंस ऑफ टू डिफरेंट सेंटेंसेस। क्या है वो डिफरेंट सेंटेंसेस? एक बार पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्री बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड, ठीक है, या मैन काइंड। सो इस सेंटेंस का मतलब, यहाँ पर दो सेंटेंसेस एक्चुअली, देयर आर टू सेंटेंसेस। Photosynthesis is important for a tree. Photosynthesis is important for humankind. ठीक है? तो ये दोनों सेंटेंस क्या है? बैलेंस्ड है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, मतलब आप दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो ऑफ कोर्स हमें वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। सेंस वाइज जाओगे तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड balanced clause.
एक दूसरे से रिलेटेड तो है, जैसे कि मैं फोटोसिंथेसिस में दोनों सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ, रिलेशन तो दोनों में है, लेकिन वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला रिलेशन नहीं है यहाँ. सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड क्लॉज. सो एक बार फिर से हम एग्जाम्पल को देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज neither I will cheat in exam nor I will support you. ना तो मैं एग्जाम में चीट करने वाला हूँ, ना ही मैं तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ. ठीक है. Then photosynthesis is not only important for a tree but also important for humankind. This is also correlative क्योंकि relation बनाता है. इस conjunction का जो काम है, it creates relation between clauses. Next, both Aman and his friend are swimming in the pool. So Aman is also swimming in the pool and his friend is also swimming in the pool. तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं. ठीक है, तो बैलेंस्ड हो गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरिलेटिव एग्जाम्पल. नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड. Well, so I hope you have noted down. So shall I proceed to the next slide? What do you say? Sir, Sir, give the example. Yes, Sir. sure. Both national flag and national anthem are important for unity of the country. Very nice, good. Very nice example, and it is value-based example. Good, very good. Yes, anyone else who is willing to give any more example? I want to see conjunction. Yes, Piyush. So I want to see subordinating conjunction. I have some words left. Okay, subordinating conjunction. Wait. Yes, finish it up. Well, now what to do? We are going to join sentences. Clear? We have come to know about conjunctions, and now the next task for us is to join sentences. Clear? And there will be also a task for you, and that is you can say homework. And please complete the homework. Don't give any excuse. Okay, so Piyush, if it is completed, then tell me. I have to proceed to the next slide. Yes, sir, complete. Okay, it is completed. Very nice. Yes. So see, there are 5 sentences, you can say. Each one contains 2 sentences, of course, and we have to join the sentences using the following conjunction, which you can see at the bottom of the screen. But one thing is there are 6 conjunctions, but you have 5 tasks. Clear? Actually, this is not your homework, this is practice. Okay, I will tell you the answer definitely, then I will give you homework. So without wasting a single moment, write down the 5 questions. Okay, as you finish, as you write them, just tell me. I will show you the answers. One more thing you can do, that is, as I said, there are 6 conjunctions. That means one conjunction is not required. If you can guess which conjunction is not required, you can tell me. Okay, so let me read the sentences. First, he will not spend his money, he will not invest it. Second one, they will have to find a new player, there are 11 players in the team. Third one, he अरे इसमें तो is has 2 बार हो गया. Just a minute ना. Why it is happening? Okay, let me share it. Yeah. He has not missed the train. He was late in the morning.
next. Sheetal had won prizes. She was only 3 years old. And fifth one, the final exam is approaching. We must start self-study. So one conjunction is extra, which we don't need. Can anybody tell me which one is not required? So the conjunctions are when, since, neither nor, though, so that, which. Okay, so let us do like this way. So for the first Sir, one, exactly, your answer is correct. Good. Now you need to tell me which conjunction is required to join the first question. He will not spend his money. He will not invest it. Which one we need to use to Sorry, I join? was telling second. You are telling for the second one. Yes, tell me. sir, neither. For first one. Who is that? Is it Parsh? No, sir. Kalash. Kalash. Yes, absolutely right. For the first one, we have to use neither nor. Good. For the second one, which conjunction we have to use? They will have to find a new So player. that. So that. Okay, इसको अभी so that पे फिक्स नहीं करते हैं, छोड़ के रख देते हैं, क्या पता दूसरा भी यूज हो सकता है. थर्ड के लिए क्या यूज होगा? He has not missed the train. He was late in the morning. दो. अरे वाह, वेरी गुड. किसने कहा दो? Who is that? Yes. ओके, याशिता, वेरी गुड. यस, थर्ड के लिए दो यूज होगा. गुड. फोर्थ के लिए क्या यूज होगा? शीतल हैड वन प्राइजेस. शी वॉज ओनली 3 years old. When. Yes, good. We can use when. Very nice. And fifth one के लिए क्या यूज होगा फिर? The final exam is approaching. We must start self study. So that. So Since that. final exam is approaching. हाँ, तो so that clash हो रहा है. तो सेकंड के लिए हम Starts. हाँ, तो सो दैट क्लैश हो रहा है, तो हम सेकंड के लिए सिंस का यूज कर सकते हैं. ठीक है. सिंस देयर आर 11 players in the team, they will have to find a new player. Okay, I think you have written the questions. Now you just write the answers. सबका हो गया? लिख लिया सबने? जल्दी से बताओ, 5 मिनट बचा है. Yes, sir. 1 minute. Wait. Okay, do it fast. Then we will see the answers. Then you will get task, or you can say homework, which you have to do in home. They're done. Okay, everyone, give me response. If it is done, tell me yes sir, yes sir, yes sir. Yes, sir. Okay, okay. Show me your show me your thumbs up. देखता हूँ कितने लोग का हुआ है. Those who have done, they have to show their thumbs up. Taste the thunder. 3 लोग का दिख रहा है, 4 लोग का दिख रहा है मुझे. Only 4. 3, 2 हो गया, मतलब अच्छा कुछ देर बाद तो हट भी जाता है. Okay, I think all of you have written. Now see the answers. Yes. So the first answer, it will be like this: neither he will spend his money nor invest it. So one thing you must have seen कि यहाँ पर जो है यहाँ सेंटेंस में क्या था? He will not spend. तो क्योंकि हम लोग नीदर यूज कर रहे हैं, तो नॉट का यूज दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार नॉट से वो पॉजिटिव हो जाएगा. समझे ना? जैसे 2 टाइम माइनस माइनस से प्लस हो जाता है. तो नीदर ही विल स्पेंड हिज मनी, ना ही वो अपना मनी को स्पेंड करेगा, नॉट इन्वेस्टेड, ना ही उसको इन्वेस्ट करेगा. ठीक है. तो नीदर का मतलब ऑलरेडी नो होता है. तो यहाँ पर नीदर ही विल नॉट मत कर देना, तो फिर वो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ही विल स्पेंड इट, है ना? ऐसा नहीं कि वो पैसा खर्चा नहीं करेगा, तो मतलब वो खर्चा करेगा. नेक्स्ट, दे विल हैव टू फाइंड अ न्यू प्लेयर सिंस देयर आर 11 players in the team.
इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंस देयर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम, कॉमा, दे विल हैव टू फाइंड अ न्यू प्लेयर। ठीक है, एक प्लेयर जो है एक्स्ट्रा रहेगा तो भी कोई जैसे रिटायर्ड हर्ट हो जाता है तो फिर एक खेल सकते हैं ना। नेक्स्ट थर्ड वन, ही अरे यार फिर यहाँ पर इज आ गया, he has not, what हो गया समझ नहीं आ रहा है। ओके, so he has not missed the train though he was late in the morning। ठीक है, थर्ड वन इज ऑल्सो डन, वेरी इजी। फोर्थ वन आप लोगों ने सही चुना था, when conjunction, शीतल had won prizes when she was only 3 years old। and the last fifth one, that is the final exam which is approaching, so that we must start self-study। so complete this, then you will get your homework, but I don't think time is sufficient। okay, okay, I will share the homework in group, okay, in WhatsApp group, so you just do the homework and tomorrow I will ask। Sir, what is Yes, what what did is you ask? homework? I not listened. What is homework? The homework I am going to send you in group, okay, जो WhatsApp group है ना अपने क्लास का, Oh, उसमें भेजना, उसमें तो लगभग सभी बच्चे हैं, so just do that। yes, you have 1 minute to complete। complete it fast। yeah, countdown is started। okay, have a good day। Bye, sir.